I love I love करेला with आमरस. अरे eat everything, but I also work out, and I've been very disciplined since childhood. I've been a dancer. यार इट लुक्स सो यम। घर का खाना घर का खाना। I love घर का खाना only. मतलब ऐसे comfort food चाहिए तो इंडियन ही है वड़ा पाव. Like I love vada pav. Cooking. She wants me to cook, so I will cook. Food is Life. Hi guys, this is Aruna Purve and you watching me on Filmy Mantra. सबसे पहले तो वेलकम टू द एपिसोड ऑफ ड्रामा ऑन द प्लेट। वेल, अपना ड्रामा दिखाने के लिए इस वक्त इस एपिसोड में जो गेस्ट है हमारे साथ, शी हैज स्टार्टेड हर करियर विद अ डेंटिस्ट एंड देन इनटू अ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड नाउ अ वेरी वेल नोन एक्ट्रेस। वेल, वेलकम हेली दारूवाला ऑन आवर शो। हाय, हाउ आर यू? ओह माय गॉड, यू ऑलरेडी लुक सो फिट। और अब हम चीट डे करने वाले हैं। चीट तो करेंगे। तो हमें बेसिकली वही दिखाना है कि हाउ कैन दिस एक्ट्रेसेस बी सो फिट आफ्टर ईटिंग सो मच ऑफ फूड। मुझे देखना I eat everything, but it's just about the timings. Not everything, मतलब not every day, but I eat and I have to eat. Like today is one of the days. लेट मी टेल यू, दिस प्लेस 1 BHK is owned by her only. तो हम आए आपके रेस्टोरेंट में, तो चलो Yes. चीट डे करते हैं। क्या कुछ खाएंगे हम वो Let's डिसाइड go. करते There are too many things I want you to try. Come. हैं। Hi, this is Haley Daruwala and you're watching Filmy Mantra. सो हेली, हमने ड्रिंक्स तो ऑर्डर कर लिया है एंड दिस इज एक्चुअली आई कैन से माय काइंड ऑफ ड्रिंक। Okay, because it's sugar free. या हमारा चीट डे भी ऐसा ही होता है, शुगर फ्री चीट डे ही रहेगा. क्या कुछ ऑर्डर किया है बताओ जरा। I ordered like paneer makhani pizza, one pasta from the new menu. We have a new menu which is come. One Buddha bowl, which is a salad, so that हम balance कर सकते हैं हमारा pizza. सबसे पहले तो मुझे पूछना है, हाउ फूडी आर यू? I am quite a foodie. I love the. देख के लगता नहीं, आई स्वेयर। But I eat everything, but I also work out, and I've been very disciplined since childhood. I've been a dancer. हाँ. So since childhood, like working out, it doesn't even feel like working out. Going to the gym feels like working out, but I do yoga also. So I have 3-4 activities that I compile in my routine, जो एक week में मैं divide करती हूँ. तो ये मैं सालों से कर रही हूँ ना, so इसलिए आदत हो गया, इसलिए बॉडी मैं को भी खा भी आदत हो पाती गया। हूँ. But obviously I have timings are very important, so I try to not eat after 8 p.m. I try, but shoot में unavoidable हो जाता है. But like I try, but I don't eat junk and all every day. I would like to eat, but I eat once a week, और जब भी मन करता है eat, so that then I don't crave for it. But I like home food more. मैं घर का खाना चाहती हूँ. बट चीट डे कितने बार होता है आपका? नहीं, ऐसा कोई डे फिक्स नहीं है. इट्स लाइक बहुत सारे दिन मैं ऐसे डिसिप्लिन सिर्फ घर का खाना खाती हूँ, और फिर 1-2 दिन कभी मन करता है तो आई डू दैट. तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि चीट करना है, ऐसा मुझे ख्याल भी नहीं आता, बिकॉज आई थिंक द फूड एट माई हाउस इज ओनली वेरी टेस्टी. सो आई डोंट घर का खाना है, घर का खाना। आई लव घर का खाना ओनली. कुकिंग आती है? कुकिंग ऐसे आती है, बट इतने बहुत टाइम से कुक किया नहीं है. बट मैं कुकिंग बता सकती हूँ कि करना क्या है. कुकिंग वो हंस रही है मुझ पे. कुकिंग नहीं आती, तो कभी सोचा नहीं? बता सकती हूँ क्या करती हूँ. कभी सोचा नहीं कि मुझे नहीं करती हूँ थोड़ा कभी कभी यार. आई मेड पोहा, आई कैन मेक भुर्जी, पनीर भुर्जी. चाय तो एवरीवन कैन मेक, मैगी एवरीवन कैन मेक, बट मैगी इज नॉट, आई मीन आई डोंट ईट अ लॉट. अच्छा, बस ऐसे बहुत एक्सटेंसिव कुकिंग नहीं किया है, बट कर सकती हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं उसमें क्या क्या डलेगा, क्या मुझे पता है. एज एक्टर्स ऑल्सो यू हैव टू मॉनिटर योर डाइट ना, सो यू नो कि उसमें क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा. इट्स जस्ट दैट यू डोंट कुक. ऐसे कोई पर्टिकुलर फूड है जो यू अवॉइड ईटिंग टोटली? Like sugar drinks which has sugar. I don't like that. I mean, you shouldn't have that. Apart from that, I try avoiding maida as much as I can. इसलिए शायद से ये आपके यहाँ पे शुगर फ्री ड्रिंक्स है। हाँ, everybody's become health conscious now. I feel. I think they should. It's Yeah. now. अभी तो कितने सारे न्यूज में भी ऐसे आते हैं कि कम उम्र वालों को भी
हार्ट अटैक आ रहा है। No, health is very important. Exactly. Having a fitness routine is very important, and it's not only if you are in front of the camera or not in front of the camera. It's for your overall well-being, mental stimulation, physical activity. Everything is very important. It's an overall thing. ऐसा नहीं है कि just because in front of the camera you have to look fit. You have to look fit regardless. आई नो दिस क्वेश्चन इज वेरी अर्ली टू आस्क, बट जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपको कुकिंग नहीं आती है, बट आफ्टर मैरिज वो आती है, ऐसा नहीं आती, बस I prefer not to cook. पर वो होता है ना आफ्टर मैरिज पहली रसोई जो बोलते हैं, अरे बाप रे, मैंने वो सोचा नहीं उसके बारे में. बट कुछ मीठा ही बनाना होता है ना, यू हैव स्वीट टूथ। I can make a हलवा और समथिंग, सब आता है. इट्स वेरी बेस्ट. मतलब रेसिपी अभी ऐसे बता सकती हूँ, बस मैंने बनाया नहीं है, तो मेरी मम्मी देखेगी तो बोलेगी कि नहीं आता है इसको, बट मुझे आता है, मैं बनाती हूँ. दिस इज अ रैवियोली पास्ता. बहुत यम लग रहा है. यम तो है, जल्दी खत्म हो जाएगा. And that is salad, no? There is a Buddha bowl salad. It's also very tasty. It doesn't feel like a salad. Yeah, it looks so yum. I'm also trying for the first time because it's a new menu. Oh. There's goat cheese. Goat cheese my favorite. ऐसा खाना मिल जाए तो चीट डे में रोज करूं। Cheese मैं रोज ही खाता हूँ. Cheese, I love all sorts of cheese. इसमें मुझे मिंट वाला भी फ्लेवर आया, Make me chives है. ये जो ऊपर है ना, ये वाला। the green, yeah, those are chives, and there is almond and walnuts. ऐसे फैंसी फूड आपने कभी ट्राई भी किया है बनाना? ट्राई ये कैसे try कर सकते? This is not. एनी अदर फैंसी फूड घर पे? Yeah, we make. I don't make. My cook makes at home. She makes Mexican tortillas and all of that we make. But वो इंडियन ही बना देते हैं उसको राजमा वाजमा डाल के. Mexican food is very similar to Indian food. So my mom makes a lot of that. But हम फिर वो touch तो इंडियन ही आता है, तभी वो tasty लगता है. But I love like उसमें फिर salsa add कर दो, थोड़ा avocado, sour cream. So, देखो मैं रेसिपी सारी बता सकते हो, लेकिन बनाना नहीं है. कैसे बना भी सकती हूँ, पर वही तो बोल रही हूँ, मैं बनाना नहीं चाहती हूँ अभी. खाना चाहती हूँ. So I have some salad also, ना. वो भी है. So how about Asian food? अचानक से सुशी बहुत वायरल और फेमस हो गया है, आपको पसंद है? No, I like Korean food a lot, but again I'm a vegetarian, so I think the Asian food that we get in Bombay ना, वो कहीं और नहीं मिलेगा. Even the high-end Asian restaurants जो हैं in Bombay, I think we have really good Asian food. I like Korean noodles and all. I like sushi इतना नहीं, but I like dim sums. I like noodles a lot. I eat it every 3 days. We also have another restaurant called Baoji. It is very famous for Asian food. So I order from there like most of the time. That is also Nanderi food. बट अगर कोई फूड का चाइल्डहुड मेमोरी पूछे आपसे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मतलब ऐसे कंफर्ट फूड चाहिए तो इंडियन ही है. वड़ा पाव. Like I love vada pav. So when I'm at outdoor shoots and all away from Bombay, so I just crave for vada pav. I don't know. बचपन से ही? I had 3 days ago. अगर स्कूल की मेमोरीज की बात किया जाए तो पता है वो टाइम पे स्कूल के बाहर कैरी, फिर वो सब. My school was in Surat, Gujarat. So Gujarat, Surat also has amazing food. So we have this thing called locho. Gujus would know what I'm talking about. से खमन होता है ना, उसके पहले का एक फॉर्म होता है which is थोड़ा सेमी सॉलिड ऐसी कंसिस्टेंसी. और उसपे then they put like mirchi and masala and they put a lot of butter and save and all that. It's too tasty. So school memories are only about locho. Whenever I go to Surat, I always have it. और क्या कुछ है सूरत का खाना स्पेशलिस्ट क्या है जो आप अभी भी मिस करते हो स्टेइंग इन मुंबई? Like here also you get it, but you don't get like how you get it there. Locho is one thing which people don't know also. They don't get it also over here. वैसे टाइप का मिलता तो है, ready packets भी मिलते, ready to eat. I तो have that also at home sometimes. And then there's this drink called cocoa. It's not your regular chocolate cocoa. It's something else only. So that you will get there. So these two things I always miss. गुजरातियों का स्पेशल है छाछ आफ्टर द मील. Yeah, I love छाछ.
I love chundo. You've tried chundo? Chundo My God! And it's also अभी तो mango season है ना, तो it's like my mom will send me fresh chunda and all that. I love chundo. वो कैसे होता है? I love Because thepla. I have never seen or heard also. अरे it's a मतलब मीठा मीठा और तीखा, स्लाइट तीखा मीठा आम का अचार जैसा ही होता है, बट मीठा होता है. Got it, got it. Dark कलर शेड में होता है. नहीं यार, क्या शेड कैसे बताओ. सब अचार जैसे होता है. हाँ, बट मीठा. मीठा होता है. मीठा. वो समर में अभी आपको मिलेगा. स्पेशल. Yeah, it is for summer. I think we all live for the mango season. आमरस एंड पूरी. उसके सामने ये सब कुछ नहीं लग रहा है. ये तो फैंसी फूड हो गया. इंडियन फूड में आ जाता है. और अभी तो सीजन भी शुरू हो गया आम का, Yeah. तो फिर आमरस पूरी तो आई थिंक आप डिनर के लिए भी खा आमरस तो सकते I हो और love. लंच के लिए भी खा सकते हो. पर ऐसा कौन सा डाइट की बात चल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा. डाइट तो चला ही गया, ऐसे खाने के बारे में बात निकली है तो. Try the pizza ना. I think I've eaten a lot. सच में. This pasta only my stomach is full. पास्ता से हेवी हो जाता है थोड़ा. You don't want the salad? इसके बाद अच्छा. You eat salad? नॉट रियली. Even I don't really eat. I just ordered this today because I was like, okay, इसके साथ. आई थिंक दिस इज द न्यू मेन्यू ना. Hey, this is our signature salad Buddha bowl. It's very famous. This is from the new menu. अच्छा, दिस इज न्यू वन. बट इट वाज गुड. ऐसा कोई फूड एक्सपीरियंस है दैट यू रिग्रेटेड आफ्टर ईटिंग? I'm not very experimental. मुझे बस ऐसे comfort food चाहिए होता है. Even Asian food, it took me a very long time to like start liking it. But then once I start liking it, then I eat it so many times and so much over years. वही खाती रहती हूँ. फिर एक टाइम आता है जब मैं बोर हो जाती हूँ. फिर मैं then I go on to something else. Like that happened with me and pizza. That happens with me and like vada pav. कुछ भी मैं इतना ज्यादा एक ही चीज पे consistently loyalty दिखाऊंगी कि भले मैं once a week खाऊं but मैं वही खाऊं. So ऐसा कोई I'm not very experimental when it comes to बट बचपन में तो किया होगा ना काफी एक्सपेरिमेंट. all this. यही सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, all these गुज्जू items. I've eaten a lot of Gujarati food in my life and I love it. I love. और दड़ब इतना मिलता नहीं है, मतलब when you're traveling and when you're at shoots, of course वो घर पे ही बन सकता है. स्केड्यूल जो हमारा रहता है खाने का वो भी हाँ, ऊपर वो भी नीचे हो है. जाता है. टाइमिंग एंड ऑब्वियसली हेल्थ वाइज इट्स और कॉन्शियस चॉइसेस ऑफ व्हाट टू ईट व्हाट नॉट. घर पे से कभी ऐसे डांट मिली है कि टिफिन आधा ही घर पे लेकर आए स्कूल टाइम में? हाँ, मैं I have a lot of nakhras when it comes to food. I don't eat onions in my food. I don't eat most of the things. So जब भी मेरा खाना बनता था घर पे, my mom used to, अभी भी मतलब my mom used to separate because I not eat onions. My brother wants onions. Oh God. And ऐसा सब था, तो always I was only one to be blamed कि इस ये नहीं खाएगी ना ये वाला, तो इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा. ये वो नहीं खाएगी तो इसके लिए. So I have a lot of things which I don't eat. I don't like mushrooms. I don't like onions. I prefer no ginger and garlic also sometimes because I like more. I don't know if it's just how it was. मुझे किसी ने बोला नहीं है ये खाओ या नहीं खाओ, but I like more of sattvic food, something which is very calming, simple and calming. That's what I like. So I try जब घर पे बनता है तो I make it according to me. Otherwise outside तो like when you're shooting and all, जहाँ मिलेगा मिलेगा, जहाँ नहीं मिलेगा नहीं. बट ऐसे कुछ पर्टिकुलर डिशेस होते हैं जिसमें ऑनियन के साथ खाए तो ही अच्छा तो है. मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अनियन पसंद ही नहीं है. पाव भाजी I eat we make amazing pav bhaji without onions. विदाउट ऑनियन. Yeah, in my house you see amazing pav bhaji. But everyone else eats. हाँ. I don't like it, so I don't. But we have amazing pav bhaji. You will not get to know. हमेशा से हमारे दिमाग में ये आता है गुजराती फूड मतलब मीठा होगा उसमें. नहीं, तो आप कुछ कहना चाहोगे ये चीज को लेकर? ऐसा कुछ नहीं होता. हाँ, हमें मीठा पसंद है, बट हम सब भी बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है. But we make amazing, tasty Gujarati food. There is not always sugar. We use gur a lot. We use jaggery a lot, but not in everything. दाल, मीठी दाल. यार वो तो पेटेंट है ना, मीठी दाल तो चाहिए. खट्टी मीठी दाल. क्योंकि हम हमेशा से बोलते हैं बट हम गुजरात. बैलेंस कर लेते हैं ना फिर दूसरी चीजों के साथ. फिर हम वर्कआउट भी कर लेते हैं. वही मैं पूछने वाली थी कि इफ यू आर अ वेरी फूडी पर्सन, आप खाते भी हो तो उसको कवर अप कैसे नहीं, होता है? मैं बैलेंस में खाती हूँ. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रोज डाइट सफिशिएंट. तो खाने के बारे में सोचना और खाना खाना दो अलग चीजें है.
मैं सोच सकती हूँ ना. हाँ. अगर मैं खा नहीं सकती तो क्या हो गया, मैं खाने के बारे में सोच सकती हूँ. There are so many times I add food items to my cart. Just keep it in the cart and I'm like, हाँ ठीक है खा लिया. Because consciously though you have to make a conscious choice. Correct, correct. You have to be healthy. There is no way. You have to have control on your mind. तो पसंद तो सारी चीजें आ सकती है. जैसे हम शॉपिंग पे जाते हैं, हमें कितनी बैग्स पसंद आती है तो हम थोड़ा ना सब ले लेंगे. ले लेंगे. हाँ. Just in your mind you feel good. Oh wow, that's so nice. That's it. I have a lot of self discipline. So foodie होना मतलब you just love food. Foodie होना मतलब ये नहीं कि you're just eating all the time. Correct. You love food. So yeah, I try to have a balance. Now I can see you as a very fit person. Back then, जब आप छोटे थे तब कैसे थे? मैं फिट ही थी. Touch wood. Wow. मैं बता रही हूँ ना, मैं सीनियर केजी में थी तब से I started my like I was dancing. I started training in Bharatnatyam for 8-10 years. Then I started training in Kathak. So Bharatnatyam was a very intense physical. अभी भी मेरी मुद्रा ऐसे हो जाती है. Very intense form of workout. तो मैंने बचपन सीनियर केजी से स्टार्ट किया हुआ था. Wow. So because of that my foundation ही इतना strong था. तो मुझे फिर उसके बिना ना कुछ मिसिंग लगता था कि मेरा कुछ like if I don't have a one form of workout ना, I used to not feel good. So I think that helped. फिर उसकी वजह से like, It's been now the Always journey the is the same. But switch के बारे में क्या कह रहे थे? Dentist to and now a well-known actress. ये मुझे पता था. I wanted to study. I was a very good student. I still have a lot of inclination towards biology, medicine. I still study. I have a lot of books. Wow. I'm a nerd. I'm nothing like what you say. Like you know, like I told you, जो screen पे आता है ना वो मेरा alter ego है. और जो मैं real में हूँ ना, I'm very different. So I am to myself. I love reading. I love upgrading. I love to have more knowledge. So मुझे पता था कि मैं medical field में कुछ करूँगी. और ये मेरा क्रिएटिव साइड था, वो एक्टिंग एंड डांसिंग. बिकॉज आई टोल्ड यू आई हैव बीन ऑन स्टेज सिंस चाइल्डहुड. वो थ्रू डांस हो, थ्रू स्टेज, थ्रू कथक, थ्रू अदर फॉर्म्स. सो देयर वर टू साइड्स. वन वाज लाइक my mind which wanted to study and wanted to explore that, and one was my heart and my whole creative side. So I knew बचपन से कि मैं एक करूंगी ना तो मैं I'll feel very incomplete. I want to do both. I want to see both. Like I want to study both. And yeah, so that's how I always was very sure that I'll try to act also. If that works out, okay, great. So yeah, मुझे मालूम था. मालूम ही था. बट मैं किसी को बताती नहीं थी क्योंकि लोग ऐसे कहते थे ऐसे थोड़ी होता है. How can you be 2-3 things? I'm like I want to do both. So And why not? Yeah. You should be versatile. yeah, I think see knowledge never goes waste. I mean, I would be very different if I didn't get the education that I got. So I'm very grateful that my journey, turned out to be the way it has. But being a dentist, ऐसी कौन सी specific food है जो आप आपके patients को बोलते हैं avoid this? So, like I said, aerated drinks, जिसमें carbonated drinks, that will spoil your teeth. I don't want to name brands, but like carbonated drinks. Aerated drinks. Yeah, aerated drinks will spoil your teeth for sure. Anything which is acidic, anything, and also like what time are you eating, what are you eating, because people don't know that acidity is one of the main causes which spoils your teeth. So avoid acidic food at like night and all that time. The body is not able to digest it completely. मुझे भी नहीं पता था, अब मुझे पता चला. That will spoil your teeth. Touch wood, I don't drink aerated drinks at all. I don't like. लेकिन now जब आपने एक्टिंग करियर में अपना पूरा करियर स्टार्ट किया, पूरा जर्नी स्टार्ट किया, बट वो आपको पता है कि आपको वो जो फिटनेस है वो मेंटेन थ्रू आउट द करियर जो आप कर रहे हो उसमें रखना ही है मेंटेन. तो ऐसा कोई डिश था जो आपने स्टार्ट करने से पहले सेक्रीफाइस किया जस्ट टू बी फिट एज अ एक्टर? सेक्रीफाइस कुछ नहीं है. नहीं किया है क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं. किया ही नहीं. एक्सट्रीम. आई हैव बीन अ वेरी, आई डोंट नो, पीपल कॉल इट बोरिंग या पीपल कॉल इट पता नहीं, जैसे जो मेरे मम्मी पापा बोलते थे मैं वही करती. अगर उन्होंने बोला अगर उन्होंने बोला नो एरेटेड ड्रिंक्स, आई विल नॉट हैव एरेटेड ड्रिंक्स. इफ दे विल से यू स्लीप एट दिस टाइम, आई विल स्लीप एट दैट टाइम. सो आई हैव ऑलवेज बीन like my dads and moms, Very whatever disciplined. very disciplined, whatever they say. And my brother is completely opposite.
So I was like, ये कैसे हो सकता है, ये मेरा भाई कैसे हो सकता है? So in the sense, so I'm very disciplined. So whatever they told me is my truth. तो बचपन से ही I was like that. तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, कुछ difficult लगा नहीं, because I've always been disciplined. And for me, that was my reality. ना, that is how it has to be. So when people say कि अब से आज से कल से मैं वर्कआउट शुरू करूंगा, कल से मैं ये नहीं खाऊंगा, तो मुझे लगता था पर ये तो आपको वैसे भी नहीं खाना चाहिए, तो why are you eating it anyway? कॉलेज टाइम में ऐसा होता है जब फ्रेंड सर्कल But होता है। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर्स थे ना सारे। अरे हम फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज। हाँ, बट बाहर कभी खाने के लिए बट हमें पढ़ाया ही जाता था इतना कुछ, तो अभी भी वो मुझे विजुअल्स याद है। मुझे हमने, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ मेडिकल, ऑफ कोर्स जिसको जो करना है वो उनकी मर्जी है, वो खाएंगे पिएंगे, बट बिकॉज यू स्टडीड दैट आफ्टर 12th or after taking science from 11th standard, you are only studying symptoms है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, ये symptom है, वो symptom है, so there's so much information that you've already gathered when you're young, तो you already know कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो मेरा तो वैसा ही है, I operate from what I have already learned ना, तो मुझे लगता था ये करने से तो ये होगा, ये तो मुझे कॉलेज में कभी ऐसे लगा ही नहीं कि I should go out and do something else or एक्सप्लोर करें। nothing. Food नहीं, food is fine. Food तो is like if you have healthy options or otherwise also, but ऐसा कभी मैंने extreme कुछ नहीं किया कि से extreme में मैंने कभी कुछ किया ही। मैं यही हूँ, I don't have anything else to say. So there are no stories I can give you. अगर आपको डेट पर लेकर जाना है तो क्या कुछ खाना आपके टेबल पे होना चाहिए? I think I would like to have some Korean noodles and I would like to have some Asian food. Yeah, right now I'm in that space, but I like Asian. Tell me your first date experience. First date experience? खाने का ही और कुछ बस क्या खाया था वो टाइम पे? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा आधा टाइम तो पढ़ाई में ही गया है लाइफ में, और so हो सकता है बस might have had a coffee or something, cold coffee. That's what I remember. डांसिंग आपने जैसे कि बहुत बचपन से शुरू किया था, बट तभी कुछ ऐसे गाइडेंस दिया था आपके मेंटोर ने कि स्पेसिफिकली ये फूड खाना चाहिए, ये चीज अवॉइड करना चाहिए? Yeah, they used to always say the same कि जितना हो सकता है प्रोटीन इंटेक रखो, जितना हो सकता है टाइम पे खाओ, जितना हो सकता है प्रोटीन इंटेक रखो, टाइम पे खाओ, eat till 8 PM। तो मेरे गुरुजी she used to say that तो जल्दी ने जो स्टार्टिंग जल्दी खाओ, तब से वही। हाँ, my mom dad also used to say Follow that. the same thing. हाँ, I think in Gujarati families now we are very we love food, but we also have like a set routine. मुझे लगता है सारे families में almost 7:30-8 को dinner हो जाता है। हाँ, so वो मेरे family से ही आया है कि you have to eat by 8 o'clock and simple food at night so that it's easy to digest. तो सब बचपन से ही ऐसे ही सिखाया है। तो though we love food, हाँ. but I think हमारे timings ऐसे होते हैं कि which is healthy for your body. बट अगर टाइमिंग की बात किया जाए तो वाइल शूटिंग ऑब्वियसली वहां पर टाइम तो होता नहीं है जो फॉलो हो पाएगा प्रॉपरली। 8 बजे तक आई थिंक डिनर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर शॉट ही चल रहा है 9 बजे तक और आपका डिनर स्किप हो गया तो फिर तो मैं स्किप कर दूँ, डिनर स्किप कर देती हूँ क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती, 9-10 के बाद भूख नहीं लगती। और अगर खाना भी पड़ता है तो कुछ बहुत ही लाइक अ सूप और समथिंग आई हैव, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ईट ओनली आफ्टर लाइक 8-9 क्रॉस होने के बाद, सो आई स्किप इट। तो एसिडिटी इशू नहीं होता इफ यू स्किप? इफ आई ईट आई गेट एसिडिटी, इफ आई डोंट ईट आई एम फाइन। क्योंकि ये बहुत थॉट आता है बिकॉज बीइंग एन एक्टर I'll have like say paneer, grilled paneer or something like that, little bit just to fill up my stomach, or I'll have a soup or something, but I can't have a heavy meal after 10 o'clock. जाएगा ही नहीं, मुझे नींद ही नहीं आएगी। How does your tiffin lunch box looks like when you are on shoot? It's the same what is at my house, so I eat sometimes I eat rice or sometimes I eat roti for lunch, or I eat quinoa. So there's maybe a bowl of quinoa with any one हरी सब्जी, जैसे टिंडा, भिंडी, any one हरी सब्जी I'll have dal. So this is and dahi. So this is what is in the lunch. Dinner I'll have very light. The dinner I'm okay with not eating much. सूप पी लिया नहीं, हाँ, sometimes soup and chilla or like something like that, which is easy. Sandwich I'll have, but paneer, like grilled proper protein paneer and
that with a lot of vegetables. I'll have all that. So dinner, I'm not very bothered about. Dinner, I can have anything small. तो अच्छा है कि अगर वो शिफ्ट आज थोड़ा एक्सटेंड होगा तो भी टेंशन नहीं No, I'm fine. So mornings, I'll have avocado toast. Poha, I love. Dosas, I love. So all that I'll have in the morning. Wow. So Heli, if today's show had a flavor, what would it be? A little peri peri. Little bit of peri peri. Paneer. Okay. What does your plate look like on a busy shoot day? On a busy shoot day, I am not able to eat so much. जो मैंने इतना कुछ बोल दिया है. On a busy shoot day, I'll have Fruits maybe? fruits also not that much. My comfort food is dosa. Dosa. South Indian. Dosa, idli. On a busy, if you give me a choice, I'll eat that, and then fruits maybe later. Yeah. Okay. What food instantly makes your mood better? Desserts, which I'm not able to eat a lot. Desserts. Any food you hated as a child but love now? Karela. I love Karela. I love Karela with amras. You have to try. अरे मतलब not Karela in amras, but puri Karela and amras. It's a balance, yeah. You've not eaten. Come to my house. मैं सोच भी नहीं I सकती love combination. I love. Now I love Karela. Earlier I used to not. Now I know the benefits of Karela, so I like it. God. Okay. Was there a Sunday special meal in your house? Every Sunday you mean? Yeah. Something or the other. So we used to have a lot of. अभी भी होता है वो तो मैं शूट पे होती हूँ तो मैं मिस आउट कर देती हूँ या मैं घर नहीं जा पाती इतना तो मेरा मिस आउट हो जाता है बट वी हैव अ लॉट ऑफ चाट्स एंड पानी पूरीज एंड दही पूरीज एंड ऑल वी मॉम मेक्स एट होम एंड इट्स लाइक अ ह्यूज स्प्रेड सो वो तो होता ही है Sunday special. संडे या कोई भी दिन हमारे साथ संडे ही है तो कोई भी दिन वंस अ वीक तो होता ही है. Okay. What's one dish that takes you straight back to your childhood? खमन ढोकला. Typical Gujju. Yeah, खमन ढोकला. Okay. If you could eat one childhood meal again, exactly the same way, what would it be? Yeah, so my dadi used to make puran podi, which is called bedmi in Gujarati. It's the same what you get puran podi here. So she used to make that with bhindi. And yeah, since the time I've lost her, I've never. Obviously, I crave for that taste. That is one thing which is irreplaceable. Any food trend you don't understand at all? I don't think I'll be approved by everybody, but like matcha. Same. I don't want to. Yeah. It's okay if you don't approve of it, but yeah, matcha. I tried my best, but I'm okay with like not having it. You're a coffee lover or tea person? Now I've become a full coffee person. Coffee person. Yeah. वही चाय कॉफी भी के चाहिए साथ होती- छेड़खानी नहीं चलती. बीच में चाय चाहिए होती है बट ऐसे नहीं है पहले मैं आई यूज्ड टू बी अ चाय पर्सन बट आई थिंक बिकॉज ऑफ शूट्स एंड ऑल आई स्टार्टेड लाइकिंग ब्लैक कॉफी कैफीन चाहिए. ओनली ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी. बट वही है ना कि कॉफी के इतना साथ भी नहीं बट देन यू हैव टू हैव इट इन मॉडरेशन अगेन दैट आई विल ओनली हैव लाइक 2 cups a day. आई थिंक व्हाइल यू आर शूटिंग आई थिंक वो 2 कप से भी ज्यादा लग जाएगा. नहीं मैं नहीं करती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना करूँ आफ्टर दैट ऑल्सो आई हैव माय टाइमिंग 5 बजे के बाद मैं नहीं पी सकती वरना नींद नहीं अगर नाइट शूट हो तो नाइट शूट है तो मुझे देन ऑल्सो आई डोंट नीड इट आई नॉट हैव इट आई डोंट वाओ नीड इट एनर्जी कैसे मिलती है मिल जाती है ना अभी वो माइंड मेंटल होता है यू आर प्रिपेयर्ड इन योर माइंड दैट आज पूरा नाइट शूट है यू इट्स जस्ट मेंटल मेंटली आप प्रिपेयर कर लेते हो. जैसे कि आपने बोला कि माचा नहीं पसंद तो वही बीना कॉफी लवर नाउ कॉफी के साथ छेड़खानी नहीं पसंद. बिल्कुल भी प्लेन ब्लैक कॉफी. yeah I like my coffee like black coffee and I have I put a little bit of ghee in it in the morning. मॉर्निंग सेम Yeah. सेम. Yeah, little bit and little bit cinnamon so that I wait for that for the morning to happen कि मैं ये पीऊंगी फिर देखेंगे क्या हो रहा है. आई थिंक उसे बुलेट कॉफी कहते हैं. bullet coffee but मेरे तो but you know in India people used to have it long since a long time तो अभी westernize हुआ है with bullet coffee but ghee always in Ayurveda had a lot of benefits. My great grandfather used to have it and then my dada then my dad तो वो लोग तो पीते ही थे वो तो अब वेस्टर्नाइज हुआ है और बुलेट कॉफी कॉफी नाम रख दिया. वन ओवररेटेड डिश अकॉर्डिंग टू यू. overrated I cannot say sushi
हमारा choices same है. Korean noodles and all are fine. Sushi, I'm like very overrated. I feel maybe the logo. I mean, everyone can have their own choices. Okay. Your go-to comfort food after a long shoot. रात को टाइमिंग के या साथ फिर अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो आप so comfort food is poha dosa, very light. light. Okay. Have you ever hidden food on set so that no one can steal it? I don't think anyone wants to eat my food because I get very boring food sometimes. And it doesn't even have onions in it. So I don't think किसी को चाहिए मेरा खाना, कोई मांगता भी नहीं. Tasty होता है, but once they taste it once, then they will know. But I don't think so. But yes, I used to have this in strawberry season. Now I eat Nutella sometimes. Guys, not every time, but instead of that, you can use a sugar-free chocolate peanut butter or something. So on a toast, you'll put that peanut butter, and on that you'll put strawberries. So I used to get those strawberry toast, which people used to steal, and all my friends used to be like, "कल 5 ले आना, 6 ले आना." तो वो मैं छुपाती थी लोगों से. खाली वो ही था. अब पता चल जाएगा. Is cooking or eating therapeutic for you? What? Cooking or eating? Eating. Eating is therapeutic. Cooking, I can making coffee is therapeutic. Against ही हो यार ये. नहीं नहीं मैं अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं अभी बना के एक वीडियो भेजूंगी आपको. अरे I love. See, when I'm alone in the kitchen, I'll make something for myself that is very therapeutic. I like to make. I used to make a lot of chai for myself. I used to feel कि वो मेरा time है. I used to enjoy that. Same with coffee and all. And when I have, I don't mind doing that. It is therapeutic. But eating is more therapeutic for me. वो कभी stress eating हुआ है? हाँ यार, chocolates, desserts are something now which is like I like waffles, I love Nutella, I love all that stuff. But you should not have it. Just add to the cart and don't buy it. One food rule you live by. One food rule Food rule you live by. which I live by. Eat by 8 p.m. That Yeah. is the Yeah. पहले से ही ये जो rule है वो. हाँ पहले से ही है. फिर वो आपका intermittent भी हो जाता है, सब हो जाता है ना. But if you eat early and then next day I eat like सीधा at 11 a.m. or something. So that's like your intermittent fasting. हाँ. It's all the same only. It's just that we've given it modernized terms. But talking about table manners, how much do you follow? I pretty much eat like how I've eaten right now in front of you. At home, you're saying? Yeah, I'm quite. I like. मतलब मैं हाथ से भी खाऊंगी. जो चीजें रोटी सब्जी तो हाथ से ही खाएंगे. और जहाँ पे हाथ की जरूरत नहीं है, avoid. It's just like that. But of course, I follow table manners. It's important. Important. It is important. जो अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे. नहीं नहीं ये भी ठीक है. बात नहीं करना चाहिए. That is the main rule. Yeah, but the interview is about food, ना? So we are Yeah, talking. of course, of course. As we all know that you own this place, तो यहाँ के जब मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, तो आई थिंक मैंने भी जब मेन्यू चेक किया काफी हेल्दी डिशेस थे. क्योंकि अंधेरी has a lot of actors also, ना? Everyone wants healthy food only. हाँ, तो Yeah. इसलिए वो सोच के ही आपने डिसाइड किया. नहीं हमने ये सोचा था हम क्या खाएंगे. In the sense, when you go out, what will you look at things to order? ना? Order. तो वो तो obviously you will, if you are making a space, आप अपने आप को भी तो उसमें डालोगे. Like you will have an essence of yourself also. These are the food items I would like to eat, like these healthy salads, this, that. So you can't have मतलब we have comfort food also. We have paneer makhani and roti also. We have all that also, but we have a lot of health options also. So it's both. Both. It's टारगेट ऑडियंस के लिए इजी हो जाएगा. both. Some days you want to eat salad. Some days you want to eat normal food like that. Right after a shoot also. Yeah. This place looks like home. That was the idea, na? That's why it's called 1 BHK, because it's like it is very homely and cozy, and you'll feel like you're at home. That's why the table manners are like home only. ये आइडिया कहाँ से आया to start a business in this? Yeah, one of my main partners, Ankit, who has a lot of other restaurants in Andheri and Juhu, it was his idea for sure. It was his idea for me also to be a part of. Like he gave me an idea that you should be a part of this and all of that. So it all started with him. Oh. Yeah, it just happened. Yeah, it had to. Like it just happened for me. So अभी since you are very good in dancing, तो कभी सोचा है स्टूडियो भी ओपन करता? नहीं ऐसा ख्याल नहीं आया है मुझे, because I love to dance. I can have a space only for myself, but I am not good at
like conducting, owning a studio or doing, I don't know what to do with it. Of course, there are many spaces which are missing in Bombay. In around this area, they should have more studios. But I just love to dance. I would love to dance in front of the camera. Like I would like to dance in songs, in movies, and all of that. It's a studio का ख्याल नहीं आया. बट अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात किया जाए तो काफी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है जो ऐसे बिजनेसेस शुरू किया है. वी टॉक अबाउट शिल्पा शेट्टी, बेस्टियन ओपन किया उन्होंने, या विराट कोहली, वन कंपनी. तो क्या कहना चाहिए उनके बारे में भी, एंड ऑल्सो कितना फायदा है, प्रॉफिट है इस फील्ड? It depends. I think every actor is associated with a brand which resonates with them. So profit and loss, so I can't say much about that. But they are very successful ventures which they have also done, and obviously they add a lot of face value to the brands that they have. So that is different only. पर हमारा तो ये था कि we just wanted a space जो थोड़ा घर जैसा हो, where you could just come, have a meal, enjoy yourself, and feel at home, and also have all the options which we felt were missing in the market. That's why we came here. But yeah, like I'm passionate about this. Obviously, I'm very passionate about acting and my dancing career. But as much as that, I'm also into medicine, like I said. So in future, if I have to have something else, I would like to have my, like, I've never said this earlier, but I would like to have a clinic of my own, which is obviously, it doesn't have to be that you are practicing in it, but one of the ventures which I would partner with really good doctors that I have as friends. I wouldn't mind doing something like that. Wow. That is in the future. And then have a production house also. Wow. Too many things. सोच के रखा है, विश लिस्ट. It's an Italian resort. Affogato. न्यू मेन्यू. Yes, this is new. वाओ. It's too good. कॉफी लवर्स के लिए I would suggest please try this. It's too good. It's very nice. Vanilla ice cream with chocolate sauce. Then espresso one. This I can finish without. This is vanilla, yeah. I can finish this without getting distracted also. If I have my favorite dessert or something, और कोई बात कर रहा है या कुछ हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा 5 मिनट के लिए. मैं अच्छा. I finish it. I'm like, please let me eat this. We'll talk later. So you want me to continue No, the rapid fire I'm now? good with you because you're also eating with me. We'll start with a rapid fire. So, sweet or spicy? Sweet. Street food or fine dining? Fine dining. Fine dining. Eating with hands or spoon or fork? अरे घर का खाना with hands, बाहर का खाना with fork. Like I mean Indian food तो with hands only ना, रोटी and all that. You prefer with hand more? रोटी कैसे खाओगे? रोटी चावल I eat with spoons. रोटी I eat with hands. Dosa and all you eat with hands. Yeah. Midnight snacker or disciplined eater? Disciplined eater. Always. Always. बचपन से ही मन ही अभी नहीं करता ना midnight snack खाने का, तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ मिस आउट हो रहा है. रात में भूख लगी तो if you are shooting night shift में तो थोड़ा सा खा सकते, थोड़ा सा. मेरा यही है तो कि क्या खाओगे आप नाइट शिफ्ट में अगर if you are shooting? वही है ना, मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं सो जाती हूँ. Like I said, I'll have a khichdi or something. If nothing is available, so I'll rather have a dahi khichdi, or like I'll try to have some little bit of paneer, or like some, just to have my protein intake. I'll just order a paneer or something so that I feel हाँ protein खा लिया. Maharashtrian comfort food or global cuisine? Okay, we can take it. Gujarati comfort food or global cuisine? Gujarati comfort food. Okay. Strict diet phases or cheat days? Strict diet phases. Okay. Vada pav or pani puri? Oh no, vada pav, vada pav, vada pav, vada pav. I just love vada pav. Cooking or ordering? Ordering. Cooking. She wants me to cook, so I will cook. Cooking. अब मुझे देखना next dish. हाँ हाँ, अरे अभी बना दूंगी. Cooking. Okay. पूरन पोली और श्रीखंड? पूरन पोली. Okay. Food picks first or eat immediately? Food. Childhood favorite or current obsession? Current obsession. What's that? It depends on every day, but like I said, अभी आजकल I'm having Asian food a lot. A lot. Current obsession.
And childhood favorite? Childhood favorite also, like What's once in a that while, dish? locho. Locho. Yeah. So you're choosing Asian No, food no, over ऐसा locho. कुछ नहीं है. But अभी पूछोगे right now what I want to eat, I want to have some noodles. अभी खाया है फिर भी I'm just thinking of noodles. सोचने में क्या जा रहा है? सोच तो सकते हैं, दोनों खाना. Okay. Ordering for others or ordering for yourself? What is more easy? Easy for you. Ordering for myself, because others will not like what I'm ordering. So ordering for myself. Cooking for others or being cooked? What is being cooked? Cook. Somebody's cooking for me or me cooking for others. Others. No, I would like to host people. Cooking कौन कर रहा है उससे क्या matter करता है? I like to host. Host. Yeah. Okay. Finish the sentence. Food is Life. a perfect meal needs. What? A perfect meal needs a perfect drink which is like chash for the moment. और अब तो summers आ गया तो Chash. Last, I lose control when I see. Like, I don't lose control, but when I see desserts, I'm like, yeah, why did I see this? But I don't eat it that much. I'll just have one bite and then I'm like, हाँ ठीक है, हो गया. हो गया अभी भी आपने वही किया. हाँ, बस वो देखती हूँ तब लगता है, oh my god, then I can't even finish. But talking about your latest film now, Love Lottery, क्या कहना चाहोगे? How was your experience? Oh, we shot for almost 1 month in Uttarakhand and it was amazing. I just got back a week ago. It's a beautiful film. I'm sure everybody will love it. And वहाँ पे भी काफी food experiments किए हमने इधर उधर, because the shootings locations are very far off and all. तो रोज हम figure out कर रहे थे which is the best cafe to go to, this, that post shoot and all that. It was fun. पर उत्तराखंड में क्या कुछ खाने को ऐसे यार पसंद आया हम आपको? रोज ही shoot कर रहे थे. Explore नहीं किया वहाँ But पर no, खाना? we did have like they had a lot of variety of momos, ragi momos, healthy momos, all of that. They had a lot of variety of that, so that we explored. And otherwise, so every day we were shooting only. So whatever healthy, as much as we could have, more health options. Okay. So you just wrapped the film. ठीक है? तो तभी we enjoyed your BTS and every glimpse from the Instagram which you have posted about the shoot. What was the experience throughout the shooting the film? I mean, like I said, it is something which I was looking for since a very long time. And I don't know how it happened. It magically landed. Really, such में it was just one call and I was like in disbelief that acha, I'm doing this film, okay. And they're like in a week we started and it went on floor, because usually क्या होता है, कोई project की बात चलती है तो चल रही होती है, prep होता है, like, you know. But maybe like for me it was very immediate. Everyone else was locked earlier and the prep was on. But for me, I came much later into the picture and it just happened so fast and everything was amazing. I had such a beautiful time shooting the film. I mean, I'm sure you'll all love it. And creatively as an actor also, I feel so satisfied after doing that film. I can't tell you. मैं सच बता रही हूँ. And also because I was in Uttarakhand, जो days मेरे off थे, I went to Rishikesh. I did Ganga Aarti 4 times. Because I was there for 1 month, I went to Haridwar, Rishikesh. मैं बता रही हूँ, it was like divine intervention, spirituality mixed with work also, and it was just a very beautiful experience. So I can't wait for you guys to watch it. तो ये इसके पहले जब हुआ था शूटिंग तो आई थिंक तभी ठंडी चल रही थी, तो वहाँ पे उत्तराखंड में क्या था? Yeah, it was cold. Cold only. Cold. It was cold. It was raining, and we had some night sequences also, so it was very cold. Okay. How do you manage the every different roles you play in your life? Actress, dancer, and restaurateur. What does a day in your life of Heli Daruwala look like? ऐसा कुछ ऐसे मैं segregate नहीं करती हूँ this that. So I have always, like I said, my heart is in acting. My heart is in acting. But when I'm not in that process, while you're waiting for a project or while you're like working on yourself, there are other things also you can dedicate your, matlab the whole day if you have. So like 1 month when I was shooting, I was only acting. Like my whole focus was only there. And otherwise also, obviously in my restaurant, we have an amazing team who looks after everything. And I don't think I have to put in much effort because the team is so good. So they let me know. Obviously that's why I'm able to do what I'm doing otherwise also. And as far as my
dancing and acting go hand in hand. Yeah, it's a creative medium. So when I'm not acting, I'm just rehearsing. और like that keeps me sane. It's like a part of my life only. So मुझे नहीं लगता उसके लिए मुझे कोई separate time निकालना पड़ता है. वो बस है. मेरी जिंदगी का हिस्सा है. मैं कुछ भी करूँ. And being from the medical field, so when I have time, I always read. So reading helps. As much as you read, also as an actor, also it helps you. Not only medical books, otherwise also I read. So yeah, it's just everything is an overall developmental process. Acting मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वो करो. अगर आप अपने आप पे काम नहीं करोगे ना, you'll never be a good actor. Like people will not be able to resonate with you. You to work on yourself is a constant process. अब वो आप किस तरह से कर रहे हो, how आप अपने आप को कहाँ ढूंढते हो, कहाँ अपने आप को सबसे ज्यादा महसूस कर पाते हो. You have to do those activities. So for me, these are the things which keep me like in check. आईपीएल शुरू हो चुका है, कितना फॉलो कर रहे हो आप आईपीएल? नॉट अ क्रिकेट पर्सन. I'm not watching it now. I've not been able to watch it. वही. ओके. लास्टली ऐसी कुछ फूड रिलेटेड टिप आप देना चाहोगे आपके सभी फैंस को, क्या होगा वो? Healthy tip? या हेल्दी टिप. Healthy tip is just eat whatever you want. Eat by 8 p.m. Don't eat after 8 o'clock. That's the only tip I can give. But eat in moderation. मतलब being healthy is very important. So work out, have a routine. Fitness will give you more joy than food will. But food is also, अगर हम उसे सही तरह से खाए और टाइम पे खाए और मॉडरेशन में खाए, जैसे ये डिजर्ट है. You could eat the whole thing, but like in moderation, you can share it with 4 people and have it, when you feel like. So I think that works. Thank you so much. It was lovely conversation with you. Thank you for having me. Thank you so much. Thanks.